Hello students, welcome to my class. Today we will discuss some concepts about fluid mechanics. Now students, first try to understand what are fluids. So it is written here, the liquids and gases together are termed as fluids. Okay, or in other words we can say that substances which can flow are termed as fluids, right? Now you know that fluid is to be incompressible. Okay, now first term is fluid pressure. So students, pressure at every point, ठीक है, is defined as the normal force per unit area, P equals to del F upon del A, and its SI unit is Pascal. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. You should understand it clearly. Now, see atmospheric pressure. What is it? You know students, atmospheric pressure is, it is the pressure of Earth's atmosphere. Okay, normal atmospheric pressure at sea level is taken as one atom. One atmosphere means one atom, which is equal to 1.013 into 10 to power 5 Pascal, or generally we take it as 10 raised to power 5 Pascal. Now, you should understand that the excess pressure above atmospheric pressure is called as gauge pressure. Okay, and the total pressure is called absolute pressure. ठीक है बेटा जी? So you should understand these terms. Atmospheric pressure ko we have to measure this. So which instrument we will use? Barometer. Barometer is used to measure atmospheric pressure. Okay. Now, first important term is Pascal's law. Pascal's law states that a change in the pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the containing vessel. Suppose करिए किसी वेसल में आपने कोई फ्लूइड रखा हुआ है, ओके, एंड वी अप्लाई ए प्रेशर. सो जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है उसमें जो चेंज होगा, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू all the parts of that fluid, right? So there is a lot of practical applications of Pascal's law. One such example is hydraulic lift. Pascal's law is applicable in hydraulic lift, right? Next we have beta Archimedes principle. What it states, when a body is partially or fully dipped into a fluid, जब हम पानी में डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, the fluid exerts contact force on the body. फ्लूइड क्या करेगा, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा. द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स. और चारों तरफ से फ्लूइड की तरफ से ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगी, वी कॉल इट एज बॉयंट फोर्स. सो दिस फिनोमेना इज बॉयंसी. ओके, हेयर सपोज कीजिए F इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. वो है F इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. जब वो बॉडी आपने पानी में डाली है तो उस बॉडी ने जो, उस ऑब्जेक्ट ने जो पानी डिस्प्लेस किया है, इट इज इक्वल टू F सपोज. नाउ दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स एंड एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड. अब ये जो बॉयंट फोर्स है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, वो जो प्रेशर डेवलप करेगा, उस बॉयंट फोर्स को हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे? F इज इक्वल टू V सिग्मा स्मॉल g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर V इज व्हाट? V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ दैट liquid, right? Now see,
नाउ अपथ्रस्ट इज व्हाट, जो ऊपर को पुश लगता है पानी का किसी ऑब्जेक्ट पे जब ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. Upthrust is always equal to weight of the liquid displaced by the body. So remember this. अब flotation क्या चीज है बेटा? Flotation. A body floats in liquid if the average density of the body is less than the that of the liquid. किसी भी liquid में वही body बेटा float करेगी whose density is less than that of that liquid. और density ज़्यादा हो जाएगी अगर object की लिक्विड से या वाटर से, तो वो उसमें इट विल इमर्स, डूब जाएगा. द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बॉयंसी मस्ट अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन. ये भी याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी and the center of the buoyancy must be along the same vertical line. Now try to understand what are fluid dynamics. First is steady flow or streamline flow. The flow in which the velocity of the fluid particles crossing a particular point is the same at all times. Okay, velocity of fluid particles अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी सेम रहती है, दैट ईच पार्टिकल टेक्स द सेम पाथ हैज टेकन बाय द प्रीवियस पार्टिकल थ्रू दैट पॉइंट. ओके, तो ये एक स्टीडी फ्लो है. एंड लाइन ऑफ फ्लो, इट इज द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल इन फ्लोइंग लिक्विड. जो पार्टिकल जिस पाथ को अडॉप्ट करेंगे, दैट इज लाइन ऑफ फ्लो. नाउ what is equation of continuity? Suppose in a time delta t, means जो time duration है, it is delta t, the volume of the liquid entering the tube of flow in a steady flow is a1 v1 delta t. The same volume must flow out of the liquid is incompressible. The volume flowing out in delta t is, ये time duration है, delta a2 v2 delta t. So बेटा क्या होगा यहाँ पे, the condition will come out as a resultant as a1 v1 is equal to a2 v2. This is, and its mass flow rate is PAV. P or rho, you can say rho has ये, rho is the density of the liquid. Now we come to our next concept, which is Bernoulli's theorem. It's very important theorem, students. In a streamline flow of an ideal flow. अब अच्छी तरह से समझिए what the Bernoulli's theorem is saying. In a streamline flow of an ideal fluid, the sum of pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume, and kinetic energy per unit volume. Sum of pressure energy means sum of potential and kinetic is always constant at all the cross section of the liquid. So sum of the pressure energy per volume जो है वो equal रहेगा across all the cross section area of that liquid. So it will be P plus rho GH plus PV square upon 2, which is equal to constant. And Bernoulli's theorem बेटा इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. किसी भी MCQ में, इवन यू में भी आस्क्ड ए क्वेश्चन बाय गिविंग अ डायग्राम ऑल्सो. तो आपको इसको ध्यान में रखना है. Bernoulli's equation is valid only for incompressible steady flow of the liquid with no velocity. ये incompressible steady flow के लिए अप्लाई होगी. ओके, अब हम पूछ सकते हैं कि भाई इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, where is that applicable? Bernoulli's theorem. So first is velocity of efflux. Okay, velocity of efflux. Let us find the velocity of with which liquid comes out of a hole at a depth h below the liquid surface. Derivation is not there in your क्योंकि competitive examination में you have to understand first
what will be the ultimate result? That velocity will be equal to root 2 gh. H is the depth of the hole here. And second is Venturi meter. This is an instrument for measuring the rate of flow of fluids. यहाँ भी बर्नौलीज थ्योरम applicable होती है. Right? So these are the important applications of this theorem. Next concept we have in fluid mechanics is Stokes' law. When a solid moves through a viscous medium, okay, when a solid moves through a viscous medium, its motion is opposed by a viscous force depending upon the velocity and shape and size of the body. So it is clear from the law. Law क्या कह रहा है कि आप मानो कि कोई सॉलिड जो है वो विस्कस मीडियम के थ्रू पास कर रहा है, देन उस सॉलिड का जो मोशन है इट इज अपोज्ड बाय द विस्कस फोर्स. ओके, और ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करेगी? इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड शेप एंड साइज ऑफ इट द बॉडी. The viscous drag on a spherical body of radius r moving with velocity v in a viscous medium of viscosity neta is given by F is equal to sigma pi neta r v. This is the relation which is termed as Stokes' law. Okay, now one can ask you, आपसे कोई भी पूछ सकता है भाई इस स्टोक्स लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए बेटा, दिस लॉ इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज with the help of Millikan's experiment. Second, this law accounts for formation of clouds. जो clouds बनते हैं वो भी स्टोक्स लॉ पे डिपेंड करता है फिनोमिना. थर्ड, this law accounts why the speed of raindrops is less than a body falling freely with a constant velocity from the height of clouds. And last one is, this law helps a man coming down with the help of a parachute. So ये कुछ conditions हैं जिनमें ये law applicable होता है. सो आज पार्ट 1 वीडियो में आप इतना ही समझेंगे. ओके, थैंक यू.